So very good evening class. Today is the class of the MCQ class number 15 of the UGC-NET paper 2 mass communication and journalism. Questions are very much important. So we will understand the concept through the question. So here the first question it is there that term development journalism was coined by everybody. The term development journalism was coined by, you might have heard the questions like the term development communication was coined by, but here is the question, it is about the term development journalism, right? So what is the answers here? So options are Alan Chalke, it's Kim Childers, Christiana Hogan, and William Rosemary. Everybody, very much important. Timer is running. So everybody please reply. जल्दी से रिप्लाई करेंगे और शीघ्र रिप्लाई करेंगे. The term development journalism was coined by everybody. Answer it. Nobody has answered. Nobody has answered, right? So have you gone through these questions? ये questions आपने कभी देखा है या किया है? The term development journalism was coined by. Have you heard the name of the Alan Chalke? No, right? कभी नहीं. So here the important it is that Alan Chalke का बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको ध्यान रखना है. द डेवलपमेंट जर्नलिज्म कभी भी आपका लाइन में आए, राइट? व्हेनेवर द टर्म डेवलपमेंट जर्नलिज्म, हु कॉइन्ड डेवलपमेंट जर्नलिज्म, और दे कैन आल्सो आस्क यू दैट द एलन चार्ले is associated with, so that is development journalism. Okay, so very much important about these terminologies and their relations. Okay, so always remember एलन चार्ले जो है क्या है, डेवलपमेंट जर्नलिज्म को टर्म को कॉइन किया था. ओके, सो here is important that they coined the term, he coined the term in the 1970, and he believes that development journalism's journalist job is threefold. तीन मोड में क्या है इन डेवलपमेंट जर्नलिस्ट का जॉब होता है. पहला, that mainly to inform, secondly to interpret, and third that is to promote, right? So according to, they can also ask you that according to Alan Chalke, what are the threefold of the what are the threefold for the development journalist? Everybody, threefold kya hai wo, what are the threefold? What are the threefold for the development journalist? Yes, first that is to inform. Very good. Second, जल्दी से बताएंगे, to interpret, right? Very good, to interpret. And third, that is to promote. To interpret, to inform, to interpret, and to promote. These are the threefold for the development journalist he believes only. Okay, वो यही विश्वास रखते थे कि डेवलपमेंट जर्नलिज्म का जो काम होता है, जो जॉब होता है, वो मेनली तीन चीजें होती है. दैट इज टू इन्फॉर्म, to interpret, and to promote, right? So here in the other context, what is meant by the development journalism? Development journalism is basically that has been used in a manner similar to that of investigative reporting. इससे किस चीज का ताल्लुक किया गया है? Investigative reporting से. Investigative reporting is just to inquiry, right? So here also the development journalism is similar to the investigative reporting. How? See here it is written, viewed in this manner, the role of the development journalist is to examine critically the existing development programs and the projects of the government, right? Whatever the existing development programs are there, whatever the projects of governments are running, that is what you compare the planned project with its actual implementations. कितना implementations हुआ है, कितना development हुआ है, क्या क्या schemes ला रही है, वो सारी चीजें, whatever the development related schemes of the governments are, and what the schemes which were launched by the government, is that actually implementing, क्या implement हो रहा है. So that is what the report in your observed shortcomings, right? जो वो सारी चीजों को हम ऑब्जर्व करके हम सारे क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं about the schemes, about the projects, about the programs, right? So this about the planned project of the government, that we observe and go through and compare the planned project. That is what, that whether it is being implementation or not, क्या वो implement हो रहा है या नहीं, वो सारी चीजों को हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और रिपोर्ट बनाते हैं. दैट इज व्हाट द
development journalism. Okay, so mainly the threefold, please remember, given by the Alan Chalkle. Okay, very much important. ठीक है, क्लियर है, जब सभी को बताएंगे, दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. Yes, very good. All right. So next, what are the options? रिस्किम चिल्डर्स और क्रिस्टियाना ओगेन, इनके बारे में भी जान लेते हैं. सो सी हियर, थोड़ा सा पिक्चर देखकर आपको रियलाइज होगा कि क्या क्या ये सारी चीजें हैं. जस्ट फर्स्ट हम एस्किन चिल्डर्स के बारे में बात करते हैं. सो ही वॉज एन इंग्लिश बॉर्न आयरिश राइटर. आप पिक्चर में देख सकते हैं, English born Irish writer, influencer novel, very important novel, or the influencer novel, The Riddle of the Sands. Okay, The Riddle of the Sands, very important novel. If they can insert the options, अगर इस तरीके का ऑप्शन वो दे सकते हैं तो क्वेश्चंस भी बना सकते हैं. They can make the questions also. If they can give the options, in the options they can frame the questions also. So here it's important to learn, right? So Riskin Childers जो है, that he was English-born Irish writer, influential novel The Reader of the Sands. He served as the fourth president of the Ireland. Okay, fourth president of the Ireland. He is the only Irish president to have died in the office. ठीक है, वे इकलौते आयरिश प्रेसिडेंट है जिनकी मृत्यु ऑफिस के अंदर ही हुई, और वो फोर्थ प्रेसिडेंट रहे. और उनकी इन्फ्लुएंशियल नोवेल द रिडल ऑफ द साइंस है, और वो इंग्लिश बॉर्न आयरिश राइटर है. इतना आपको जानना है बस. ठीक है, नेक्स्ट ओगैन के बारे में जान लेते हैं. ठीक है, सी वॉज प्रोफेसर emerita of journalism in the media school and professor emerita is the Ludwig School of the Informatics Computing Engineering at IU Bloomington. Okay, so IU Bloomington जो है वो बहुत ही उनकी कॉलेज का कैंपस आप देखेंगे, ये सारे कॉलेज के कैंपस है. एंड IU Bloomington is known having the one of the most beautiful college campus in the nations. अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर ये कैंपस है. दिस कॉलेज इन द यूएसए, IU Bloomington. IU Bloomington जो है, that is the known for the one of the most beautiful college campus in the nations. Okay, and ऑर्गेन जो थे वो क्या है, प्रोफेसर है वहां उस जर्नलिज्म डिपार्टमेंट्स के. ओके, जर्नलिज्म स्कूल्स के वहां के प्रोफेसर्स हैं. सो वेरी मच इंपॉर्टेंट. फुल नेम हमने यहाँ पे ऑप्शंस में आपको मेंशंस किया है. जस्ट लुक इट हियर, क्रिस्टियाना ओगेन. ओके, क्रिस्टियाना ओगेन, क्लियर है? जल्दी से बताएंगे, क्लियर है? ओके, चलिए विलियम रोजमेरी को रहने दें, क्योंकि ये नॉर्मली स्कॉलर्स हैं, अमेरिकन स्कॉलर्स हैं, और नथिंग, नो डिटेल्स. चलिए, सो नाउ the next question we are moving towards, the newspaper should be both a daily teacher and daily tribune was stated by everybody. A newspaper should be both a daily teacher and daily tribune was stated by, किसने सेट किया था? जल्दी से बताएंगे everybody. Very important questions. Hint, शॉर्ट्स आप लोग लगता है नहीं देखते. यू डू नॉट सी द शॉर्ट्स ऑफ द यूट्यूब शॉर्ट्स बिकॉज दैट इज देयर. आप देखेंगे अवार्ड्स रिलेटेड शॉर्ट्स बना था और उसमें मेंशन किया गया था, राइट? सो आई एम गिविंग यू द हिंट. जस्ट जिनके नाम पे जर्नलिज्म में अवार्ड दिया जाता है, अवार्ड इज गिवन ऑन हिज नेम इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म. Very important and prominent personalities. A newspaper should be both a daily teacher and daily tribune. Everybody, the hint I have given to you, just you can guess it. Very good, बहुत ही सुंदर, marvelous answers. जोसेफ पुलित्जर, जवाहरलाल नेहरू, मार्शल मैकलुहान, जॉर्ज जबनर. ओके एवरीबॉडी, everybody right? Yes. Abhilasha Himani, is it clear? Okay, so see, the right answer, it is Joseph Pulitzer. Very good.
Joseph Pulitzer was a Hungarian American politician and a newspaper publishers of the St. Louis Post Dispatch. Okay, St. Louis Post Dispatch and as well as New York World. Okay, ये दो न्यूज़पेपर के पब्लिशर रहे हैं. Okay, Joseph Pulitzer. A newspaper should be both a daily teacher and daily tribune was stated by the Joseph Pulitzer. Please know. ठीक है. Jawaharlal Nehru, you know the newspaper National Herald. Yes. Marshall McLuhan given the concept of medium is the masses. Okay, global media, hot and cold media. Clear है everybody? George Abner, cultivation theory. Okay, very good. Next questions. In Meledjke model of mass communication process, the role of dash is a key one along with the role of communicator. Everybody. जल्दी से बताएंगे. इन Meledjke model of mass communication process, the role of dash is the key one along with the role of communicator. Receiver, B medium, C feedback and D masses. Everybody. आंसर्स करेंगे. यस, वेरी गुड मॉर्निंग था. सभी लोग आंसर्स करेंगे जल्दी से. यस, सो बी इज द राइट आंसर. वेरी गुड. मीडियम. ओके, so Meledjke model of mass communication process, the role of the medium, right? The role of the medium is the key one along with the role of communicator. You should remember. Okay, so Meledjke model addresses aspects like a mass audience and a certain modulations of the message, right, through a technical medium, right? Through a technical medium, very much important. Please attention, pay attention here on this word technical medium. Okay, because he considered as the role of the medium is a key one. Okay, so but neglects aspects like the direct communication between the communicator and the receivers. Okay, it means interpersonal communication से avoids. Okay, interpersonal communication को उन्होंने powerful नहीं बताया. He neglects aspects like the direct communications between communication and receivers. But in the model of the mass communications here, right, what he said, the role of the medium is the key one. The role of a medium is the key one along with the role of communicator. It means he is paying more attention towards the technical medium. And also here the example it is that in the social media, there is a direct link between the both participants, right? It means as well as communicator and receivers, we can see that there is the direct communications. Okay, so but the main thing is that there what the technical medium, it means the medium that social medium or the internet, that is the powerful medium of the mass communication. That is what the medium is a key role. Okay, medium plays as a key role along with the role of communicator in the Meledjke model of the mass communications process. Okay, clear है? जल्दी से बताएंगे. So if they alter the questions, अगर आपसे questions उल्टा कर देते हैं, right, यहां पर आपको मीडियम दे दिया और यहां पर ये फिल इन द ब्लैंक्स इनको कर दिया, राइट, लाइक दैट आई एम डूइंग. ठीक है, इन्होंने क्या किया, इसको रफ कर दिया. तो क्या आंसर होगा जल्दी से बताएंगे एवरीबॉडी. डैश मॉडल of mass communication process, the role of the medium is a key one along with the role of communicator. Yes, that is Meledjke. Okay, very much important. चलिए, all right. Now the question number 131. Agora is a, agora क्या है, जल्दी से बताएंगे. agora क्या है? What is agora या agora? A post on a Facebook, devil, C chatterbox and D marketplace on the internet. Very important terminology.
Very important terminology. Agora is a post on a Facebook. चलिए हिंट चाहते हैं, एवरीबडी वांट हिंट? चलिए हिंट क्या? दैट आंसर हैज बीन कम, ओके, वी हैव नॉट वेट, चलिए कोई बात नहीं. Agora is a marketplace on the internet, right? That is a marketplace on the internet, very much important. Marketplace. Agora is a basically Greek word. ये क्या है? Greek word है. That means the term means market. Agora का मतलब ही होता है, क्या होता है? Market. Okay, it means the term means market. It is a Greek word. Okay, so now here understand the clearly कि क्या है actually ये. The word agora applies to an assembly of the people and by extends the marks by the gathering place. Okay, this is what that there was a place, right? There was a place where the people assembles, right? For the market, they were gathered together, so there was a gathering place, right? So that we can say that in the modern the Greek the term means the marketplace. ठीक है, आज हम क्या बोल सकते हैं इसको? इसको हम बोलेंगे आज के टर्म में मार्केट बोलेंगे, दैट इज मार्केट प्लेस. But earlier it was called as an assembly of the people where people gathered together in a place. Okay, that was a gathering place. So Agora was a darknet market operating in the Tor network, launched in the 2013 and shut down in the 2015. So have you heard the dark wave? क्या आप लोगों ने सुना है नाम ये डार्क वेव और डार्क नेट? यस, वेरी गुड. So that is what actually it is, right? So dark web Agora was a darknet market, right? It was a dark web market operating in the Tor network. Tor browser होता है Tor network से, Tor browser. Have you heard about the Tor browser or the Tor network? Yes. So that is what operating in the Tor browser or the Tor network, that darknet market actually. So that launched in the 2013 में launched हुआ and that shut down in the 2015. Basically why the dark web, क्यों डार्क वेब होता है वहां पर? लाइक द ड्रग्स हो गया, ड्रग्स रिलेटेड थिंग्स, इलीगल रिलेटेड थिंग्स आर परचेज्ड एंड सेल्ड. ओके, वहां पर चीजें एक तरीके से आप समझिए कि वहां पर जिस तरीके से हम अमेजन और इस चीजों में काम करते हैं, मतलब कि सेल एंड परचेज का काम करते हैं, उसी तरीके से डार्क नेट में जहां पर लोगों की पहुंच बहुत ही कम होती है. तो डार्क वेब इज द हिडन कलेक्टिव ऑफ द इंटरनेट साइट, राइट? Dark web is the hidden collective of the internet site only accessible by the specialized web browser. सिर्फ कुछ ही वेब ब्राउजर हैं जो क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट? सो दैट इज व्हाट द हिडन कलेक्टिव ऑफ द इंटरनेट साइट्स एंड इट इज यूज्ड फॉर द कीपिंग इंटरनेट एक्टिविटी एनोनिमस एंड प्राइवेट. ओके, इसको ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, राइट? विच कैन बी हेल्पफुल इन द बोथ लीगल एंड इलीगल एप्लीकेशंस. दोनों जगह ये यूज होता है, इलीगल और लीगली भी यूज होता है. सो एगोरा इज अ मार्केट प्लेस ऑन द इंटरनेट. इट इज क्लियर? जल्दी से बताएंगे, सभी को क्लियर है? ऑल राइट. नेवर एवर फॉरगेट अबाउट द टर्मिनोलॉजी, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट? नेक्स्ट, मैनुअल कैस्टल्स. मैनुअल कैस्टल्स बिलोंग्स टू स्कूल ऑफ, जल्दी से बताएंगे, सिमेटिक्स, डेवलपमेंट मीडिया, सी पॉजिटिविज्म, डी क्रिटिकल थ्योरी. एवरीबॉडी. जल्दी से बताएंगे. मैनुअल कैशलेस belongs to a school of, no it's not, it's a right answer is that is critical theory. Okay, critical theory is the right answer. So देखिए यहां पर Manuel Castells is a Spanish sociologist. Okay, remember it, number one. He is well known for the authorship of the trilogy of the works that entitled, very much important, please remember, okay, that is trilogy of the works that entitled The Information Age,
इकोनॉमी, सोसाइटी एंड culture. Okay, very much important. They can ask you, right, that Manuel Castells well known for his authorship of a trilogy of works that entitled what? Okay, so that is what information is: economy, society and culture. Very good. Also remember this, match of the following questions में ये भी पूछा जाता है. Spanish sociologist, remember it, right? Number 3 here about that. Castells define the present social landscape. Please read it line. Okay, ये line आप पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है. What Manuel Castells said, क्या वो उनका किस तरीके से उनका what known for actually, what Manuel Castells defines here, it is that written. Okay, so Manuel Castells defines the present social landscape as the information is, okay, in which human societies perform their activities in a new technological paradigm, and argues that this landscape was brought about by the revolution of information and communication technology ICT at the second of the half of the 20th century. It means that Manuel Castells, that famous or known for information's age. Okay, very much important, right? उन्होंने ये बताया कि सोसाइटी जो प्रेजेंट सोशल लैंडस्केप है वो हमारा क्या है, इंफॉर्मेशन एज का है, राइट? वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन in which human society performing the activities in a new technological paradigm, right? Everything we are doing, we are talking in the on the WhatsApp. हम लोग आपस में बात कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी की मदद से बात कर रहे हैं. हम लोग कुछ खाना बना रहे हैं या चीजें कर रहे हैं, दैट वी आर कुकिंग द फूड आल्सो, दैट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजीज. वी आर communicating others with the help of technologies. Each and everything, our whole living system is with technology or the informations, right? That is what they said, that we are living in the age of information. So that is what the society, they are talking about the human societies, that in which we are performing the activities, that is a new technological paradigm. And he also argues that the landscape was brought by the revolution of informations and कम्युनिकेशन, दैट इज आईसीटी. ठीक है, और वो जो रिवॉल्यूशन आया आईसीटी का, आईसीटी के रिवॉल्यूशन आने से हमारी सोसाइटी बिल्कुल किस तरीके का हो गया, हमारा सोसाइटी बिल्कुल इंफॉर्मेशन एज का हो गया, राइट? वेरी मच इंपॉर्टेंट. इट इज क्लियर अबाउट द मैनुअल कैस्टल्स व्हाट देयर आइडियाज वेयर टुवर्ड्स, किधर की तरफ उनका आइडियाज था, इंफॉर्मेशन एज की तरफ था. ओके, क्लियर है? यस. सो नेक्स्ट इट इज अबाउट आइडियाज वी हैव टॉक्ड अबाउट, राइट? आइडियाज पे हमने बात कर लिया कि देयर आइडियाज टुवर्ड्स द information and communication technology or the information is basically, okay, they were talking about the society in which the ICT were helping. okay, अब आप बात करते हैं कि क्रिटिकल थ्योरी को लेकर, राइट? सो हु कॉइन्ड द टर्म क्रिटिकल थ्योरी, जल्दी से बताएंगे, और हु डिफाइन द क्रिटिकल थ्योरी? एवरीबॉडी, हु डिफाइंड क्रिटिकल थ्योरी? So first, yes, मैक्स हॉर्किमर. वेरी गुड. मैक्स हॉर्किमर ने फर्स्ट डिफाइन किया था क्रिटिकल थ्योरी को, ओके, इन हिज 1937 ऐसे, दैट इज ट्रेडिशनल एंड क्रिटिकल थ्योरी, राइट? 1937 में उनका एक पेपर पब्लिश हुआ, दैट इज ट्रेडिशनल एंड क्रिटिकल थ्योरी, ओके, दैट डिफाइंड फर्स्ट बाय द मैक्स हॉर्किमर. ओके, so now this was the fourth thing. Now the next thing, it is what important here, what is known as critical theory. Critical theory किसको बोलते हैं, right? Critical theory is a social theory, right? Critical theory is a social theory which aims to critique and change society as a whole. ठीक है? What their aim is actually to critique and change society as a whole. And basically critical theories attempt to find the underlying assumption in the social life that keeps people from the fully and truly understanding how the world works. किस तरीके से पूरा संसार काम करता है, ये हमें क्या है, एक तरीके से हम सोसाइटी को कैसे बदल सकते हैं और कैसे हम लोगों को समझा सकते हैं, तो how the world is changing, how the world actually works, that to make fully understood
or truly understood to the society. That is what their critical theory actually attempts. Okay, so this is what about critical theory MCTs to here to critique and change society as a whole. Okay, so this was about the what is critical theory. Now the thing it is here about that who were the scholars associated with the critical theory or the Frankfurt School. Frankfurt School. What is Frankfurt School? Frankfurt School was a group of scholars known for developing critical theory. Okay, the next here important about Frankfurt School. Okay, it was a group of scholars actually. Yes, group of scholars known for developing a critical theory, right? Please write it down. Okay, वेरी मच इंपॉर्टेंट. फ्रैंकफर्ट स्कूल्स को हम क्रिटिकल थ्योरी के नाम से जानते हैं, क्रिटिकल थ्योरीज को, क्योंकि क्रिटिकल थ्योरी वहां पर डेवलप की जाती है, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, उनके ग्रुप हैं, उसी स्कूल का नाम उन्होंने दिया है क्या? फ्रैंकफर्ट स्कूल्स. सो नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इट इज हियर दैट आप उन थ्योरिस्ट का नाम बताएंगे, नेम द थ्योरिस्ट हु वेर एसोसिएटेड विद द फ्रैंकफर्ट स्कूल. ओके, जल्दी से एवरीबॉडी. फर्स्ट दैट इज थियोडोर एडोर्नो. वेरी गुड. Given the concept of cultural imperialism, am I right? Or the culture industry? Yes, very good. Now the next everybody, Max Horkheimer. Very good. That the defined the first who defined first the critical theory, basically that a social theory which aims to critique and change society as a whole. Number 3, Herbert Marcuse. Everybody please note it down. C-U-S-E. C-U-S-E, Marcuse. Okay. Number 4, Friedrich Pollock. Okay. Friedrich Pollock. And last that is, please, last नहीं है, बहुत सारे scholars हैं, but in our list, Enrich Fromm. Okay, please note it down. E-N-R-I-C-H, Enrich, F-R-O-M-M, Enrich Fromm. Okay, so Theodore Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Friedrich Pollock and Enrich Fromm. Okay, ये सारे क्या हैं? फ्रैंकफर्ट स्कूल से एसोसिएटेड हैं. It is all clear, everybody? All right. So they can questions, they can ask you also. What they can ask you, right? Who defined critical theory is a social theory? Everybody जल्दी से बताएंगे. Who defined critical theory is a social theory? Yes. So a scholar's name, Max Horkheimer. Very good. A scholar's name, very much important, who were associated with फ्रैंकफर्ट स्कूल. ये भी आपको लिस्ट बनाना है और याद रखना है. ओके, ऑल्सो आपको क्या याद रखना है? दैट मैनुअल कैस्टल्स. एवरीबॉडी जल्दी से बताएंगे. मैनुअल कैस्टल्स नोन फॉर इंफॉर्मेशन सोसाइटी, राइट? मैनुअल कैस्टल्स नोन फॉर इंफॉर्मेशन सोसाइटी. यस, वेरी गुड. क्लियर है? जल्दी से बताएंगे. क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है? ईच एंड एवरीथिंग इट इज क्लियर? यस. नेक्स्ट बताइए, पॉजिटिविज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया? हु गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिविज्म? कॉन्सेप्ट, हु गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिविज्म? वांट यू हिंट? हिंट चाहिए आपको? चलिए, द लास्ट नेम इट इज कॉम्टे. एवरीबॉडी yes, very good. That is Auguste Comte. Okay, the positivism concept given by the Auguste Comte. सेमोटिक्स बताइए, जल्दी से बताएंगे. सेमोटिक्स एवरीबॉडी जल्दी से बताएंगे. व्हाट द फुल नेम? यस,
वेरी गुड। फर्डिनांड सॉसरे, ओके, चलिए, यस, फर्डिनांड दे सॉसरे। नेक्स्ट, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, जल्दी से बताएंगे, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन गिवन द कॉन्सेप्ट, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। नोरा सी क्यूब्रेल, ओके, चलिए, वेरी गुड। डेवलपमेंट, अब बताइए डेवलपमेंट जर्नलिज्म, डेवलपमेंट जर्नलिज्म, अभी हमने डिस्कस किया था। डेवलपमेंट जर्नलिज्म, एलन चार्ल्कले, ओके, वेरी गुड। सो ये सारी चीजें, कितनी सारी क्वेश्चंस निकल गए, लॉट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम सिंगल क्वेश्चंस, ओके। सो डू नॉट रीड द क्वेश्चंस और रिमेंबर द क्वेश्चंस, बिकॉज क्वेश्चंस कैन नॉट बी रिपीटेड एज सिमिलर, सेम इसी तरीके से क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, प्लीज आप लोग इसको ध्यान में रख लें। क्वेश्चंस कैन बी फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है, तो आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर फ्रॉम द सिंगल क्वेश्चंस, ओके। चलिए, ऑल राइट, क्लियर है सभी, ईच एंड एवरीथिंग इट इज क्लियर, ओके। नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चंस, ठीक है। द अदर वर्ड फॉर द कॉपी राइटिंग, द अदर वर्ड फॉर द कॉपी राइटिंग इज, एवरीबडी, डेडवुड, लॉग जैम, इंटाग्लियो, सिल्थ, एवरीबडी। नो 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 नो, it's not. No. Other word for the copywriting. Yes. Mani Megla has answered here. That is. So just take the hint here. देखिए, पिक्चर में देखेंगे आप तो कुछ समझ में आएगा। डेड वुड, डेड वुड को अगर आप, डेड मिस क्या होता है, मरा हुआ, बैड, ठीक है। दैट इज हियर डेड वुड इन राइटिंग अननेसेसरी वर्ड्स, राइट, दैट इज unnecessary words, okay. So here the example it is given, that is in the word of the day, the editor's most first role is to remove the author's deadwood, which makes for a more exciting read. So deadwood, basically that what is copywriting, copywriting that is used for the brand awareness, right, awareness, advertisement, we use for the advertisement, राइट, हमें कॉपी लिखते हैं जो हम ब्रांड को प्रमोट करते हैं, ब्रांड की अवेयरनेस करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, दैट वी राइट अ कॉपी फॉर द मार्केटिंग, विद दैट वी राइट अ कॉपी फॉर द एडवर्टीजमेंट, दैट वी राइट अ कॉपी फॉर द ब्रांड अवेयरनेस, ओके, प्रमोशंस, वो सारी चीज के लिए हम कॉपीराइट करते हैं, कॉपीराइटिंग, दैट इज व्हाट हियर, दैट इज डेडवुड, यू हैव टू रिमूव द ऑल द अननेसेसरी वर्ड्स व्हाइल यू आर राइटिंग द कॉपी। जब आप कॉपी राइटिंग करते हैं तो उसमें क्या करना है आपको, जितने जार्गन्स वर्ड्स हैं, जितने अननेसेसरी वर्ड्स हैं, उसको आपको अवॉइड करना है, राइट। सो जस्ट राइट, लुक इट हियर, कॉपी राइटिंग दैट इज एन एक्ट, that is the act or the occupation of writing text for the purpose of the advertising or the other forms of the marketing, right. This is a act, this is a occupations, right, for the writing text for the purpose of advertisement and for marketing. The product called copy or the sales copy, जिसको हम copy और sales copy बोलते हैं, that is written content, right, that is written content that aims to increase the brand awareness and ultimately persuade persons or the group to take up particular actions, और वो consumer से क्या, customer में convert हो जाए and they buy our product, right. So this is what about that copywriting, that is written content, okay. So day to day copywriters are tasked with the writing clear and concise copy for the ads. जितना छोटा और क्लियर, जितनी कंसाइज होगी उतनी अच्छी आपकी कॉपी राइटिंग होगी, okay, that for the marketing materials or the website that we write every day, okay. So that is what about the deadwood, ठीक है। deadwood वही होता है that is unnecessary words, okay, dead मतलब
जो चीजें अननेसेसरी है, राइट, जिसका यूज नहीं है, जो चीजें रेलेवेंट नहीं है, उन सारी चीजों को क्या करना है, आपको रिमूव करना है कॉपी राइटिंग में। ओके, दैट इज वॉट यू हैव टू रिमूव द डेड वुड, राइट, दैट इज वॉट अबाउट द brand's deadwood or the author's deadwood or the product's deadwood, right? That can be of the deadwood of the product, deadwood of the brand, deadwood of the author, that can be of the any deadwood, that you have to remove the unnecessary words, right? Here it is written, please understand it is okay. Clear है सभी को? जल्दी से बताएंगे, it is all clear? वेरी गुड, चलिए बहुत ही सुंदर। सो हमारे तरफ से एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब तक होता नहीं है तब तक मन भरता नहीं है, ठीक है। तो एक क्वेश्चंस मेरे तरफ से, हु हैव आइडेंटिफाइड, who have identified four models of public relations, everybody, who have identified the four models of public relations, everybody? Yes, very good, marvelous answer, growing and hunt, okay. ग्रोइंग एंड हंट हैव आइडेंटिफाइड द फोर मॉडल्स ऑफ पब्लिक रिलेशंस, और वो कौन कौन सा चार मॉडल है, एवरीबॉडी जस्ट नेम इट। फर्स्ट दैट इज प्रेस एजेंट्री मॉडल, ओके। सेकंड दैट इज एवरीबॉडी पब्लिक इंफॉर्मेशन मॉडल, ओके, यस। थर्ड इज यस टू वे asymmetric model, and fourth that is two way symmetric model, okay, very good. So these all are the four models of public relation identified by the growing and hunt, okay, clear hai? So this is all about the questions that we have discussed. Questions was very less, but we have discussed the concept a lot, right? So that is what important here, it is quality, okay, not the quantity,